So yesterday we had already discussed about the types of different lenses, concave and convex lenses. Now today we are going to understand about the image formation related to the lenses. So how images used to form through different lenses. Before we go for the image formation, we have to understand about some of the rules for the image formation. Okay, so जब हम लोग इमेज बनाते हैं या जब हम लोग इमेज ऑब्टेन करते हैं कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस से, तो उसको बनाने के लिए या उसके रे डायग्राम को समझने के लिए हम लोगों को कुछ लॉजिक्स को पहले समझना पड़ेगा, कुछ लॉजिक याद रखना है और उन्हीं लॉजिक के ऊपर सारा का सारा रे डायग्राम का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड and you will practice it because in this image formation, if you are not practicing it, then there will be a problem for you all, and you need to remember the logics what we are going to use over here for the ray diagram. So before we go for the ray diagram, let's understand the logics. तो तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे और अभी फिलहाल देखो, और हो सके तो अपने रफ कॉपी में तुम इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, और फिर इसके साथ ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन में भी जाएंगे. So first of all, we will see for the rules of or the logics of the image formation by a convex lens. ठीक है, तो पहले हम लोग convex lens का समझेंगे और उसी के साथ हम लोग concave lens का भी देख लेंगे एक साथ. Then it will be more easy for to go for the image formation. Okay, so let's start for that. So first condition or the first logic which we have to see. So this is our convex lens. We had understood about the structure earlier already. Now the rays which we are going to study over here, the first logical condition which we have to see, that is the light ray which is coming through the optical center of the lens. तो ऑप्टिकल सेंटर होता क्या चीज है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर कि हम लोग ये देखते हैं कि दोनों बाइफोकल लेंस का कॉम्बिनेशन आपस में कनेक्ट करता है विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट ये रेड डॉट जिससे है उसमें, तो अगर लाइट रे उससे क्रॉस होती है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व देयर. So if the light ray is passing through that particular point, then the light ray will not cause any bending even after refraction. यहाँ पे refraction हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई bending observe नहीं करेंगे. The light ray will pass completely. Light जो है वो सीधे सीधे pass कर जाएगी without causing any refracting bending. यानी यहाँ पे refraction तो हो रहा है लेकिन bending हम लोग observe नहीं करेंगे. This is the same kind of condition what we had observed when the light ray comes perpendicularly on a rectangular glass slab. तो ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं rectangular glass slab में, same condition यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. Now if you go for the concave lens, in the same way there it will also respond. So if you go for the concave lens, suppose for example if I go for this one, so here also you can draw the principal axis. Just construct the principal axis and then a line to just draw to divide the columns and have the optical center over there. Okay, so optical center. So if the light ray is passing through that optical center, then the light ray will be completely straight without causing any bending over there. So ये तुम लोगों का पहला लॉजिक है या पहला सिचुएशन है जिसको तुम लोग देख सकते हो. ठीक है, okay. Now let's move to the second condition, and please remember all these logics and all these rules because while we will go for the image formation, means the ray diagram of the image formation, over there you will use these conditions over there. Okay, so let's see for the second condition or the second figure. So the second one is, so for again convex lens. Okay, so for convex lens we will see, so this is the line, and please draw the principal axis properly so that you can get all the things proper in a proper manner. And here I'm not able to draw all the figures in a very correct way, but you please try to draw it in a good way because I'm using a pencil over there to on the screen which is not so very smooth to be drawn. So please you draw with a proper pencil in your copy so that you can get a good curve, and with that curve you can be able to
construct the figures properly, because on the ray diagram marks are there. If you will not draw the ray diagram properly, your marks will be deducted. So please be mindful for that one. Okay. So let's see for the second situation. So in the second situation, we are going to see that when the light rays are coming parallel to the principal axis, जब light ray principal axis के parallel आता है, then what will happen over here? So it is going to come like this. And after that, it is going to bend through the focus. हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा था कि as convex lens is a converging lens, so what happens when the light ray comes parallel to the principal axis, then it gets bent from this point, as the upper portion is like a prism and the light ray gets bended towards the base of the prism. तो यहाँ पर ये base की तरफ bend कर जाती है. So if you will go from the bottom also, you will find the same kind of condition. So from here also it is going to bend like this. It is going to bend like this. So this is a condition which we used to observe. So जब light ray principal axis के parallel आती है, तब वो converge करती है to the point which is called to be as focus. तो इसको हम लोग focus कहते हैं. So this is F2, the second focus. If you had forgotten, then you can see this the previous video and you can understand that what is F2. So F1 and F2. So first focus and the second focus. With the respect to this one, we have C1 and C2. So instead of some places instead of C1, we also used to write 2F1. And here we write it as 2F2. Why it is so? Because as yesterday only I had said this thing, that the relation between the focal length and the radius of curvature is that F is equals to R by 2. So therefore 2F is equals to R by 2. So if you go, sorry, not R by 2, it is only the R. So it is actually the focal length. So when we say for the focal length, then we come to as 2F is equals to R, means the radius of curvature. But the focus which we will be there, it will be twice of the radius of curvature. Okay, so this is the condition which we used to see. So this is the focal length. This is the focal length. Just to remind you all, this is the focal length and this is the radius of curvature. This is the radius of curvature. So the relation between that one is 2F equals to R. And one more thing, this capital F is represented for the focus, whereas the small f is representing for the focal length. So I had written over here 2F. 2F, I was just making you to know this thing, that this F is actually a connection or the point which we are referring on this principal axis. But when you will write for the numericals or for whenever you are going for the solution, then focal length always represented with the small letter F. Remember this thing. This is a small thing, but it's a very important condition. Okay. Now let's move to the concave lens, that what happens to the concave lens when the light ray is coming parallel to the principal axis, then how it used to behave and what kind of condition happens over there. So let's see for this one. So in a concave lens, when we are having a concave lens like this, and if the light ray will be coming parallel to the principal axis, then what will happen? Just a minute. For the principal axis, and with this one, if you observe that for the light rays which is coming parallel to the principal axis, you will find that it will be diverged. It will be diverged to the other side. Okay, it will be diverged to the other side, and it will appear to meet. It will appear to meet at the back side of the line. So if you will produce it, at the back side, then you will see that it is going to meet at the point focus. Okay, so the light ray will be refracting and it will be bending away from the the principal axis, and this is the condition why we used to say that concave lenses are also known as a diverging lenses. इसीलिए हम लोग इसको diverging lens के रूप में भी जानते हैं. तो हम लोगों ने देखा है कि ये कल भी हम लोगों ने समझा था कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये डाइवर्ज कर जाता है, क्योंकि इसका जो अपर पोर्शन है, यानी इस तरह के लेंस का जो अपर पोर्शन है वो असल में एक तरह का प्रिज्म है. एंड जैसा कि हम लोग को पता ही है कि प्रिज्म में लाइट रे अगर इस तरह से अगर आती है then it is going to bend towards the base, तो वो वहां पे बेस की तरफ बेंड कर जाएगी. So these were the two first rules which you need to remember. ये दो बेसिक सा रूल था जिसको कि तुम लोगों को याद रखना है. इसके अलावा एक और रूल है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. So let's see for that one also.
So when we are having a convex lens, जब हम लोगों के पास convex lens है, and in this one, if I will go for the principal axis, this line for the optical center to be drawn. Okay, now over here, अगर लाइट रे फोकस से होते हुए क्रॉस करती है, अगर लाइट रे फोकस से होते हुए क्रॉस करती है, इट इज जस्ट द रिवर्स व्हाट वी हैड जस्ट नाउ अंडरस्टूड. सो सपोज फॉर एग्जांपल इफ द लाइट रे इज कमिंग थ्रू द फोकस, अगर लाइट रे जो है वो फोकस से होते हुए क्रॉस कर रही है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर. सो अ सिंपल फिनोमेना, if the light ray is parallel to the principal axis, it gets converged to the focus, and if the light ray is coming through the focus, then it will become parallel to the principal axis. तो देखो यहाँ पर अगर लाइट रे अगर इस तरह से अगर आती है, अगर इस तरह से अगर वो आती है, जस्ट आई विल ब्रिंग दिस over here a little bit. Okay, so just a minute, then it will be more easy. Clean it up, and over here, and then I will put the to the focus this point. Just a minute, I will mark it. So ये है हम लोगों की focus. So this is F1. Okay, so if the light ray is coming on the path of focus or through the focus, if it is crossing, then what will happen? Then it will become parallel to the principal axis. It is going to be parallel to the principal axis. So like this, it is going to bend over there. So जब light ray focus से होते हुए cross करती है, तब वहां पर क्या होता है? Light ray principal axis के parallel हो जाती है. So this is again a condition which we need to remember. Now let's see what happens for the concave lens. अगर concave lens होती है, then हम लोगों के पास क्या condition होता है? So just a minute over here. Okay. ओके, अच्छा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के in a concave lens, then we used to find or we used to observe this thing that the light ray gets diverged to the other side. वो दूसरे साइड डाइवर्ज हो जाता है. तो यहाँ पर हम लोग किस तरह का सिचुएशन देखेंगे? सो यहाँ पर हम लोग जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में देखे कि लाइट रे को हम लोगों ने सीधे सीधे फोकस से क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको सीधे सीधे फोकस से क्रॉस नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग इसको फोकस के पाथ पे लेके जाएंगे. वी आर जस्ट ब्रिंगिंग द लाइट इन द पाथ ऑफ फोकस. हम लोग फोकस के पाथ में लाएंगे. तो जब फोकस के पाथ में लाते हैं, तब ये किस तरह से बिहेव करता है, इस चीज को हम लोगों को देखना है. So suppose, for example, we are having the focus somewhere here. Just a minute, I will mark it. So suppose, for example, focus जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है. तो दो focus होती है. So this is F1 and this is F2. तो अगर इसके path में light ray अगर आती है, अगर इसके path में light ray अगर आती है, then how the light ray is going to bend over there. So we will see for it. Okay. So just a minute, I will just bring the light ray. सो अगर लाइट रे इस पाथ में आती है, इस पाथ में आती है, ओके, so if I'm bringing all the light rays from the right side only, sorry, from the left side only, that's why I'm drawing to this focus. अगर इस पाथ में अगर वो लाइट रे आती है, पाथ में आने का मतलब क्या हुआ? यानी उस रास्ते उस तरफ, यानी फोकस के तरफ, यानी ये फोकस की तरफ, यानी फोकस की तरफ ही आ रही है लाइट, जो है वो फोकस की तरफ आ रही है. Then what will happen to the light ray? The light ray will refract and it will bend in such a way that it will become parallel to the principal axis. वो principal axis के parallel हो जाएगी. ठीक है? So जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि light ray focus के pathway में आती है, focus के pathway में आती है, तब वो bend कर जाती है या refract कर जाती है by forming parallel to the principal axis. वो principal axis के parallel होते हुए निकल जाती है. ठीक है? So are you all getting this thing? Have you all understood this? These all the rules which we had discussed just now, because these rules are important for the image formation. When you will go for the image formation, then these rules are going to help you to draw all the image formation for different position of the object regarding to the lens which we are going to use. Okay, so is it clear for everyone? Yes or no? Are still some Yes, sir. there? Okay. So now let's see, let's move for the image formations. अब हम लोग देखते हैं आगे दूसरे image formations कैसे होते हैं या किस तरह के image formations हम लोगों को देखने को मिलेंगे.
सो द इमेज फॉर्मेशंस वी विल स्टार्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट इमेज कंडीशन। पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग देखते हैं। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, and please all of you draw the figures neatly and properly, okay, and mark all the points properly also. Mark all the points properly so that it will be easy for you all to identify all the things over there in a good way. So the first condition, when the object is present in front of the lens, it is present in front of the lens, but we don't know what is its exact position. We don't know its exact position. So that's why we are saying this thing that the object is at infinity. We are just saying this thing that the object is at infinity. जब हम लोग लेंस से ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, जब हमको उसको एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो लेंस के सामने तो है और वो एट इंफिनिटी है, वो इंफिनिटी में मौजूद है. So in that situation, the light rays are totally coming parallel to the principal axis and they all gets converged to the point which is called to be as focus. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे की सारी लाइट रेस जो हैं वो पैरेलल आती है फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस पर आकर कन्वर्ज कर जाती है. सो सी ओवर हियर, सो एज वी डोंट नो द पोजीशन, सो द लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, all the light rays are coming parallel to the principal axis, and after coming parallel to the principal axis they will converge. They will converge to a point. They are going to converge to a particular point, and that point where they are going to converge, so that particular point is called to be the focus, और वो particular point को हम लोग focus बोलेंगे. So this will be the second focus, f2, and here we will have the 2f2, and here you can mark as 2, sorry, f1. This one will be f1 and this one will be 2f1. And one thing you can do while you are drawing the figure, with the scale you can take the exact measurement. तुम लोग scale से exact measurement कर सकते हो. इस सेंटर को तुम लोग ओ एजम कर सकते हो, ओ एजम कर सकते हो. ओ से f1 की एक सर्टेन लेंथ ले लो, से एज फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर. देन ओ से 2f1 जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो इफ यू विल टेक द लेंथ ओवर हियर, this one to this one as 2 centimeter, then to this one it will become as 4 centimeter. ये simple सी logic सी बात है. So this you can do over there. So here it is 2 centimeter and over here it will become as 4 centimeter. तो ये काम तुम लोग कर सकते हो. So after doing this one, you can go for the other side also. Yes, good afternoon. Okay, so over here you can have the length over here also, and you can have the length over here also. This will help you to get the exact location. ये तुम लोगों को exact location के लिए help करेगा, और साथ ही साथ तुम लोगों का figure एक neat and clean दिखाई देगा. And please use arrows over here. See what arrows I'm talking about. So ये arrows यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं कि ये arrows देना बहुत जरूरी है. यहाँ पर जो एरोज लाइट रे इंसिडेंट रे के रूप में आ रही है उसमें भी देना, और साथ ही साथ जो रिफ्रैक्ट करके जो लाइट रे बेंड कर रही है उसमें भी देना. And these rays will come like this. So this was the image formation when the object is placed at infinity. Infinity here we are referring to that particular point where we call the object is placed in front of the lens, but the exact position is not known to us. So we say that the object is at infinity, and when the object is at infinity, then the image is going to form at f2. Now here we have to understand the properties also. अब हम लोग को यहाँ पर कुछ properties भी समझना है. देखो image जो बन रहा है वो बन रहा है f2. So तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि when the object is placed in front of the convex lens at infinity, then its image will form to the other side of the lens at f2. It will be real. It will be real. It will be inverted. It will be inverted, as real images used to be inverted. So it will be inverted. And the third thing is that it is highly diminished. It is highly diminished. Highly diminished मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट शेप्ड इमेज है. तो पॉइंट शेप्ड इमेज है तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो बस एकदम छोटा सा इमेज जो है वो वहां पर फॉर्म होगा. बट दिस इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल फॉर्म एज ऑलवेज लाइक दिस. ये जरूरी नहीं कि हमेशा एकदम छोटा ही बने जो दिखे ही नहीं.
कंपेरेटिवली वो छोटा बनता है, हम लोग ये देख सकते हैं कंपेरेटिवली वो छोटा बनता है। जब फिजिक्स लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इस तरह के सिचुएशन में, तब तुम लोग देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल if a tall tower is there in front of your physics lab, and if an image has been formed on a small paper, then you can form a very small image of that tall tower over there. So this is possible. So we will try to perform this thing in the lab also. So हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लैब में हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन किस कंडीशन को दिखा रहा है, ठीक है। So again, when the object is placed at infinity, then its image used to form to the other side of the lens at f2, where it used to be real, inverted and highly diminished. Okay, ये था हम लोगों का पहला इमेज फॉर्मेशन। Now let's discuss about the second image formation. अब हम लोग सेकेंड इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। सो ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द लेंस। Okay, so again I'm using an electronic pen, so that's why I'm not able to draw it in a proper way, but while you will draw it in your copy, please draw it in a proper way so that it will be good. Okay, otherwise your marks will be deducted. Okay, so this is the principal axis and the half line which has to be divided the lens. Now the second condition which we are going to see, here we know the position. Here we know the position of the object. Here we know the position as it is just beyond 2f1. The object is placed just beyond 2f1. So it is just beyond 2f1. So what is going to happen over here? So let's see. So when the light ray is coming parallel to the principal axis, the first light ray which will come parallel to the principal axis, it will be bending through the focus. It will be bending through the focus as we had discussed earlier. So here the light ray is going to bend. Just a minute. Here the light ray is going to bend through the focus, something like this. Okay. Now, the second light ray will be taken from the optical center. It will be taken from the optical center. Okay, so something like this. So I will just bend this one a little bit so that you can have it in this way. Just over here. Now, the intersecting point where the intersection is going on, so there the image is going to form, and it is going to form inverted. So here the arrows, again you have to place the arrows. So this is beyond 2f1, so this is 2f1, this is f1. So over here we are having our f2, and over here we are having 2f2. Okay, so these are the positions where the image is going to form. So when the object is placed beyond 2f1, जब image को हम object को जब हम लोगों ने 2f1 के पीछे रखा है, यहाँ पर हम लोगों को exact position पता है, तो 2f1 के पीछे रखा है, just a little bit apart from it, it's not very much far. तो जब थोड़ा सा पीछे रखा है, then we are going to observe then its image is going to form between 2f2 and f2. So what would be the characters? यहाँ पे इसके characters हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? So यहाँ पे ये तुम लोग बोल सकते हो कि when the object is placed beyond 2f1, then the image of the object is going to form to the other side of the lens. To the other side of the lens between f2 and 2f2. ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो f2 और 2f2 के पीछे बनेगा। दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि the image is going to form smaller than to the actual object size. तो यहाँ पर ये जो इमेज जो बनेगा ये काफी छोटा बनेगा या छोटा बनेगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। और थर्ड सिचुएशन में ये रियल है, this is going to be real and inverted. So real होगा तो obvious सी बात है कि वो inverted तो होना ही होना है। So this is the condition which we need to remember. So again, when the object is placed beyond 2f1, then the image is going to form between f2 and 2f2, where it is going to form smaller than to the object, and it will be real and inverted. So these are the characters which we need to remember. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। इमेज का पोजीशन, उसका कैरेक्टर्स,
विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो तुमको इसके कैरेक्टर्स को पता होना चाहिए। अगर तुमको कैरेक्टर्स नहीं पता है, तुमको उसके प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तुमको उसका पोजीशन नहीं पता है, then you are not going to able to solve the numericals in a good way। तुम वहां पे न्यूमेरिकल सही तरीके से बना ही नहीं पाओगे। अगर तुमको न्यूमेरिकल सही तरीके से बनाना है, अगर तुमको न्यूमेरिकल्स एक अच्छे तरीके से बनाना है, तो ये चीज तुम समझ लो कि तुमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जानना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ द इमेज जानना चाहिए, और उसके कैरेक्टर्स को भी अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर तुमको सॉल्यूशन करना है। ओके, सो आई होप दैट यू ऑल विल प्रैक्टिस फॉर दिस वन। So for the next figure which we will see, so that would be the last figure for which we are going to discuss today, and for other figures we will discuss it in our next class. Okay, so the third condition, चलो हम लोग यहाँ पे third condition में देख लेते हैं। So convex lens, we are just going through the convex lens, हम लोग convex lens के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास इन दोनों रेज को ले लो। Okay, so here again we know the position। यहाँ पर भी हम लोगों को पोजीशन पता है। हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है at 2f1। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है वो लेंस के नजदीक ला रहे हैं। At the first situation we had kept the object in front of the lens where we don't know its exact position. In the second condition we had brought it a little bit closer and we had kept it just beyond 2f1. And now we are keeping the object at 2f1. So we are keeping the object over here. So like this, okay? So the position is 2f1. तो यहाँ पर अगर लाइट रे से क्रॉस करती है तो ये कैसे क्रॉस करेगी, लेट्स सी। So over here the first light ray is going to come parallel to the principal axis, principal axis से parallel आने वाली है, and after coming to that one, just a minute, I will put this arrow one. Okay, after this one it is going to bend through the focus, वो focus से यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और जो सेकेंड लाइट रे हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर से, एंड इट इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस। ये यहाँ पर बेंड करने वाली है। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट सी दिस बेंडिंग ओवर हियर लिटिल बिट टू द अदर साइड। It is going to bend over here a little bit. Yes, only a little bending will be there, then it will be nice to see. When you will practice continuously, then you will be able to identify what would be the position of the image formation and what is the position of the characters, or sorry, not position but the characters of the image formation. So over here we are having this one as f1, this position as f2, and the image which is going to form, that is going to be formed at 2f2. So it is going to form at 2f2. So see, when the object is placed at 2f1, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तब उसका इमेज जो बनता है वो दूसरे साइड में बनेगा at 2f2, and it is going to be real. And real means that it will be inverted. Obviously it is inverted. It is of the same size. Of the as to the object. It will be the same size as to the object, and it is going to be going to be placed at 2f2. It is going to be placed at 2f2. So the position of the image is 2f2. Just a minute, I will just clean it up. This 2 is not so very good to see. Okay, now 2f2. So the position is 2f2. It is going to be same size as to the object. It is going to be real and it is inverted. So these are the characters which we used to see for the image of the object which is placed at 2f1. तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है वो दूसरे साइड में बनेगा at 2f2, and it will be real, inverted, and same size of the object. So please, again and again, I'm repeating this thing, that you please remember the position of the object with respect to its image formation and the characters of the image formation. Okay, so I'm keeping the class till here only for today, and we will discuss some more image formations in our next class. Okay.